नमस्कार ओडिशा ओडिया शिखा आपण स्वागत एगेन आउ गोटे यूजीसी नेट पेपर 1 क्लास रे आपण समस्त को स्वागत। आशा करूँ समस्त को मो ऑडियो क्लियर आसो। स्टार्ट करिबा आज रो क्लास। प्रथम चैनल को नुआ छन तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिबा बोलबे नै, ता सहित नोटिफिकेशन को ऑल ले सेट कर देबे, जहा द्वारा हमर आगामी नोटिफिकेशन आगामी इनफॉरमेशन आपण पाखरे सर्वप्रथम पहुंच परिबो। स्टार्ट करिबा क्लास। आज रो टॉपिक होची यूनिट 4 जोटे खेला कम्युनिकेशन टॉपिक रहिबा। हम जानि जे आज पर यूजीसी नेट सिलेबस फोर्थ यूनिट इज कम्युनिकेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। Communication is best defined as what? Transfer of information, sending messages, sharing of meaning, giving instructions. Okay. Okay. मैं जानी चे शेयरिंग ऑफ मीनिंग गोटे अर्थहीन कथा कहले सेटा कम्युनिकेशन कहा जीव नहीं। कम्युनिकेशन ने सब बेले जेमती भाषा गोटे ध्वनि समूह बा ध्वनि संकेत गुड़िक कौन सठिक अर्थ प्रकाश कले कौन ता भाषा रूप जमती सामना वाला श्रोता पक्ष कौन उचित भाव ग्रहण कर भाषा कही पार नहले सेटा भाषा ही सेमती शेयरिंग ऑफ मीनिंग कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट सेंडिंग इनफॉरमेशन, इट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन मीनिंग इज शेयर्ड एंड अंडरस्टूड। यदि बुझी न पारिबो अर्थ बुझी न पारिबो तले किछ लाभ नाही। क्वेश्चन 2। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड व्हाट? सेंडर ओनली, मैसेज ओनली, चैनल ओनली, सेंडर मैसेज एंड चैनल रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर होबो कोन? सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। काहे कि दीज आर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन प्रोसेस। फर्स्ट जने सेंड करिवा दरकार, जने कहिवा दरकार, वक्ता पक्ष, मेसेज कौन जीव, चैनल बा माध्यम, रिसीवर बा श्रोता पक्ष। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। द पर्सन हु एनकोड्स द मैसेज इज कॉल्ड व्हाट? रिसीवर, डिकोडर, सेंडर, लिसनर। क्वेश्चन नंबर 3। द पर्सन हु एनकोड्स माने जी बुझे, ठीक अच्छे, एनकोड करे द मैसेज इज कॉल्ड व्हाट? सॉरी, एनकोड माने बनाए जे भाषा तैयारी करिबा माने जे कहिबा को चेष्टा करे बा कि सेंड करे और सेंडर एटा बुझी परछो। एनकोड करिबा, डिकोड करे किए? रिसीवर। सेंडर है, ठीक है। तो सेंडर फॉर्म्स एंड एनकोड्स एंड एनकोड्स ओके द आइडिया इनटू सिंबल्स। ठीक अच्छे। एनकोड करे बा माने सृष्टि करे जो सिंबल को। क्वेश्चन नंबर 4। एनकोडिंग रेफर्स टू व्हाट? रिसीविंग मैसेज, कन्वर्टिंग आइडिया इनटू सिंबल्स, अंडरस्टैंडिंग मैसेज और गिविंग फीडबैक। जस्ट टिके पूर्व कहितली कोन? कन्वर्टिंग आइडिया इनटू सिंबल्स। थॉट्स आर कन्वर्टेड इनटू वर्ड्स, गेस्चर्स और साइंस। सिंपल्स साइन कहले SIGN। ठीक अच्छे। माने जोटा को आमे साइन कहले जोटा को आमे कहू गोटे टाइप सिंबलिक। ठीक अच्छे। ये साइन कथा कहूँ SHIN कहूनी। ठीक अच्छे। क्वेश्चन 5। डिकोडिंग मीन्स व्हाट? सेंडिंग मैसेज, एनकोडिंग मैसेज, इंटरप्रेटिंग मैसेज, ब्लॉकिंग मैसेज। क्वेश्चन नंबर 5। इंटरप्रेटिंग मैसेज इज द करेक्ट आंसर। डिकोडिंग माने नहीं माने रिसीवर अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट्स द मैसेज ना नहीं। तो रिसीवर अंडरस्टैंड करे, डिकोडिंग जस्ट टिके बरोबर कहितली। क्वेश्चन नंबर 6। फीडबैक इन कम्युनिकेशन हेल्प्स टू व्हाट? Daily message, control receiver, ensure effectiveness, increase noise। Question number 6। ensure effectiveness कहीं की ना बहुत भल से हमें जानी चाहिए। फीडबैक कन्फर्म्स whether the message is understood correctly or not। फीडबैक कन्फर्म करे कौन? जे मेसेज बुझी पारिला ठीक से ना भूले। One way communication lacks what? Sender, message, channel, feedback। Simple feedback।
वन वे कम्युनिकेशन सब फीडबैक ही लैक करे ना नहीं एग्जांपल है कौन रेडियो टीवी आउ लेक्चर्स टीवी लेक्चर्स जोटा कहूँ ओनली लेक्चर न रेडियो आउ टीवी लेक्चर्स जोटा को आम कहूँ कौन रेकर्डेड क्लास गुड़ाक वन वे कम्युनिकेशन कहीं ना सामना वाला पर्सन को तुम तो क्वेश्चन पचारि पारे लाइव क्लासेस नुह यहाँ लाइव क्लास यहाँ फीडबैक अच्छी आप संगे संग तुरंत पचारि पारे टू वे कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट ए लीनियर कम्युनिकेशन इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन मेकानिकल कम्युनिकेशन इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन इज द करेक्ट आंसर वेरी गुड कहीं ना बोथ सेंडर एंड रिसीवर एक्टिवली पार्टिसिपेट है नहीं इंटरएक्टिव 9 verbal communication uses what gesture signs words symbols verbal कथा माने शब्दर व्यवहार हम है नहीं spoken or verbal communication spoken or written language आउ कौन ओके क्वेश्चन नंबर 10 नॉन verbal communication includes what speech writing body language grammar क्वेश्चन नंबर 10 नॉन verbal communication includes कौन बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल माने साइन सिंबल यूरा सब एटसेट्रा गेस्चर पोस्चर फेशियल एक्सप्रेशन है नहीं एग्जांपल एटसेट्रा ओके क्वेश्चन 11 पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू व्हाट ग्रामर वोकैबुलरी टोन पिच स्पीड ऑफ स्पीच गेस्चर्स ओके क्वेश्चन नंबर 11 पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू कौन टोन पिच स्पीड एंड स्पीड ऑफ स्पीच ओके कहीं ना हाउ समथिंग इज सेड नॉट what is said okay question number okay question number 12 kinetic studies माने कौन voice space body movements time body movements है नहीं facial expression gesture posture ये सब कौन kinesis studies question number 13 Proxemics deals with what body language use of space voice quality time question 13 proxemics deals with कौन ना use of space physical distance in communication question 14 chronemics is study of what space moment time gesture time ठीक है chronemics is study of time use of time punctuality टाइम पंक्चुअलिटी ऊपर स्टडी करा जाए क्रोनेमिक्स ओके ठीक है क्वेश्चन 15 नॉइज इन कम्युनिकेशन रेफर्स टू व्हाट साउंड ओनली साइलेंस एनी डिस्टर्बेंस फीडबैक नॉइज इन कम्युनिकेशन एटी कहिछि माने एनी डिस्टर्बेंस क्रिएट नॉइज हेले कोन डिस्टर्बेंस होय माने एनीथिंग दैट डिजॉर्ट्स द मेसेज डिजॉर्टिंग साउंड हुए कि डिस्टर्बेंस हो ठीक है क्वेश्चन 16 Psychological noise includes what? Loud sound, poor lighting, prejudice and bias, distance. जानिए prejudice and bias. कौन ना mental and emotional disturbances. या माने ठीक है prejudice and bias माने ला mental and emotional disturbances. वाला psychological noise ना ठीक है Question 17 physical noise refers to what? Attitude, emotions, environmental disturbances, culture. Question number 17 physical noise refers to what? Attitude, emotions, environmental disturbance, culture. Environmental disturbance है ना नहीं physical noise देखो loud sound, poor lighting ये सब कौन physical noise. Question number 18 semantic noise arises due to what? Distance, attitude, misinterpretation of words or sound. Question number 18 कौन ना misinterpretation of words misinterpretation of words माने कौन different meaning of the same word रो different meaning ठीक है ओके जमती माइन गोटे वर्ड ठीक अच्छे जी गोटे वर्ड डिफरेंट मीनिंग जमी माइन गोटे माइन मोर आ गोटे माइन है माइनिंग है ना नहीं एग्जांपल
Question 19. Cultural barriers arise because of what? Language only, feedback, differences in values and beliefs. D. Channel. Question number 19. Differences in values and beliefs. Okay. Question 20. Effective communication requires what? Long message, authority, clarity, complexity. Effective communication में clarity आसे simple कथा clarity आसे जीवो. Effective clarity थिलिंग effective communication आसे. Question 21. Communication is effective when what? Message is sent, message is long, message is understood, message is repeated. Understood है ना नहीं? बट जिस बुझिली सेटा communication टा effective है ना? प्रभावशील है केमिति? बट जिस तमे न बुझी परियो communication टा ताले कोन? One way communication ने convert ହେଇଗଲା हाँ नहीं? Question 22. Active listening involves what? Hearing only, ignoring speaker, paying attention and responding, interrupting. Interrupting माने मझिरु interrupt करिया माने interrupt करिया माने बाधा देबा ठीक अछि interrupt करिया. Question 22. Paying attention and responding. Simple है ना नहीं? Active listening माने. Question 23. Listening differs from hearing because listen is what? Natural, passive, active process, accidental. So question number 23 goes on. Listening differs from hearing because listening is what? Active process. Simple. सुनी बाउट active process. टिके पर से पढ़ले ठीक से सुनी पारिबानी है ना नहीं? Empathy in communication means what? Sympathy, advice, understanding other feelings, judging. देखो सिंपाथी माने जन को सिंपाथाइज करिबा जन को दुखी टाइम रे तार कोन माने गोटे कोनते सिंपाथी देबा जेटा हम कहू कोन ना साधारण भाषा रे जे ता दुख रे ताकू कोन सिंपाथाइज करिबा जेटा हम ओडिया रे कहंती आश्वासन देबा ठीक अछि आश्वासन देबा किंतु एम्पैथी हला कोन जन को दुख रे दुखी हेबा ता दुख मो दुख ठीक अछि अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स है नहीं. Question number 25. Persuasive communication aims to what? Inform, entertain, change attitude or behavior. D. Describe. Question 25. Change attitude or behavior. ठीक है. Question 26. Mass communication involves what? Large audience, small group, one person, interpersonal. कौन? Large audience. Mass कोई जो mass communication माने से आओ. Large audience आओ. Which is not a mass media? Question number 27. Which is not a mass media? Simple. Television गोटे mass media, radio गोटे mass media, newspaper गोटे mass media. ना बहुत सारे लोग यूज करते हैं किंतु classroom discussion is not a mass media. Not everyone can access the same classroom discussion. Okay. Question 27. It is the correct answer. Question number 28. Question 28. Grapevine. Communication is what? Formal, official, informal, written. Informal. है ना नहीं? Question 29. Horizontal communication occurs between whom? A superior and subordinate, teacher and student, people of same level. D. Manager and worker. Horizontal communication कहिछि simple. People of same level. ठीक अछि horizontal communication. Vertical communication कहे हाँ इन्हें just मुझे याद होती है vertical communication flows between equals upward and downward, informally, diagonally. तार opposite माने upward and downward है ना नहीं? यदि people of same level, यदि upward and downward माने same level नुहे. Question 31. Downward communication flows from what? Worker to manager, student to teacher, higher to lower authority, public to organization. Question number 31. Higher to lower authority. ठीक है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ठीक है मैंने ऊपर तौड़ को डाउनवर्ड आओ. Question number 32. Upward communication includes what? Orders, instruction, feedback and reports, policies. Question number 32. Feedback and reports. ठीक है upward communication. Question number 33. Barrier to communication can be reduced by whom? Using jargon, long messages, feedback, authority. Simple feedback है ना नहीं?
Question 34. Classroom communication is most effective when teacher is what? Authoritative, passive, interactive, silent. से कही क्लासरूम कम्युनिकेशन केतबेले फलप्रद हबो बा हेबो इंटरैक्टिव हेले टीचर इज इंटरैक्टिव है नहीं सिंपल एई क्वेश्चन को बोले वाले पकेबो त माने कंफ्यूज हो जो ओके परवर्ती प्रश्न हो क्वेश्चन 35 क्वेश्चनिंग इन टीचिंग हेल्प्स इन व्हाट कंट्रोलिंग क्लास सेविंग टाइम स्टिमुलेटिंग थिंकिंग पनिशमेंट linear stimulating thinking. Questioning in teaching helps in stimulating thinking. Question 36. Communication model proposed by Shannon and Weber is what? Transactional, interactive, linear, circular. Linear ना कौन? Linear ठीक है. Question 37. Barrow's model emphasizes on what? Source, message, channel, receiver, feedback, noise, context. Option number C. Source, message, channel, receiver. Question 38. Transactional model of communication emphasizes on what? A one-way flow. B. Message only. C. Stimulate simultaneous feedback. D. Authority. ठीक है. Simultaneous feedback. ठीक है. Question number 39. Communication in teaching is mainly on what? Mechanical, one-way, two-way process, passive, simple, two-way process, interactive. बुझी पारछ? Question number 40. Effective speech requires what? Loud voice, long duration, proper tone and clarity, fast speed. Effective speech कही proper tone and clarity. ठीक है. Visual aids in communication helps to what? Waste time, increase noise, enhance understanding, distract learners. Enhance understanding है ना नहीं? बुझी visual aids understanding practical method है जीवा है ना नहीं? Project method हो practical method. Okay. Question number 42. Written communication is suitable when what? Immediate feedback needed, emotional message, permanent record required, small group. कौन? Permanent record required. ठीक है. Written communication is suitable when permanent record required. Written communication सब तो आवश्यक नहीं ना जो permanently से जिनसटा को record करी रखा जीवो से तो कौन लेखाटा permanent communication जाउची ना. ठीक. Question 43. Oral communication is effective for what? A legal documents. B. Records. C. Immediate feedback. D. Complex data. Question 43. Oral communication is effective for immediate feedback. ठीक. Question 44. The major drawback of oral communication is what? A. No feedback. B. Lack of permanent record. C. No clarity. D. No interaction. Question 44. Lack of permanent record. Oral communication. ठीक है. Question 45. Communication competence refers to what? Knowledge only, skill only, ability to communicate effectively, language only. Competence. ठीक कष्ट. Okay, ability to communicate effectively. Okay, next question. Question number 46. Emotional barriers includes what? Noise, language, anger, fear, anxiety, distance. Question number 46. Anger, fear, and anxiety. कौन? नहीं, emotional barriers. Emotionality. जो बच्चे गोटे जगह सब दे दीजिए, है ना नहीं? Question number 47. Over communication may lead to what? Clarity, feedback, confusion, understanding. Question 47. Simple over माने communication हेले कौन हबो ना confusion रहिबो. Question 48. Silence in communication can indicate what? Agreement only, disinterest only, multiple meanings, no meaning. Question 48. Multiple meanings. Silence in communication can indicate multiple meaning. ना नहीं? ना पचारला कि राम पचारला क्या श्याम को जे तुम्हें काली नोट करना ना साइलेंट रहा मैंने मे भी करे देखा चाहूनी आमको मे भी न करे चुप रही. Question 49. Teachers non-verbal cues influence what? Only discipline, only content, students understanding, D. Attendance. Question 49. Students understanding.
Question 50. Effective communication is essential for what? A control, B. Authority, C. Success teaching learning, successful teaching learning, D. Examination. Effective communication is essential for successful teaching learning. Okay. तो आज सेशन आउ गोटे यूनिट शेष है कम्युनिकेशन। तो आशा करुँच समस्ते बुझीपारे जदि कहार किसी डाउट्स अच्छी कमेंट बॉक्स निश्चिंत भाव में कमेंट करेंगे। तो ये वीडियो पुणी देखा आउ गोटे सेशन आज पुणी राति 7 ना राति 9 आउ गोटे सेशन सारिबा। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। लेट्स